Hello students, we are studying about the village Palampur and the subtopic is who will provide the labor. After land, labor is the next necessary factor for production. So let's start. Farm laborers come either from landless families or families cultivating small plots of land. Unlike farmers, farm laborers do not have a right over the crops grown on the land. Instead, they are paid wages by the farmer for whom they work. Wages can be in cash or in kind, for example, crops. Sometimes laborers get meals also. Wages vary widely from region to region, from crop to crop, from one farm activity to another, like showing from one farm activity to another. There is also a wide variation in the duration of employment. A farm labor might be employed on a daily basis or for one particular farm activity like harvesting or for the whole year. Dala is a landless farm laborer who works on daily wages in Palampur. This means he must regularly look for work. The minimum wages for a farm laborer set by the government is Rs 300 per day, March 2017. But Dala gets only Rs 160. There is heavy competition for work among the farm laborers in Palampur. So, people agree to work for lower wages. Dala complains about his situation to Ramkali, who is another farm laborer. Both Dala and Ramkali are among the poorest people in the village. So let's see the talking of Dala and Ramkali. Here he is Dala and she is Ramkali. These both are the poor farmers. So let's start. It is difficult to find work these days. Only the large farmers hire us, and that too for very limited number of days. Ghanshyam, the large farmer, has just bought a harvester, so we are going to get even less work during the harvest season this year. Last year I worked for less than 5 months in the whole year. We have tractors for ploughing, harvesters for harvesting, threshers for threshing, even for removing weeds. Some farmers spray weedicide. This year I will have to look for work in the brick making unit in Raiganj. I offered the local money lender Rs 2000. I had taken Rs 1000 last summer when no work was available in the fields. How will I ever repay? I hardly earn enough for 2 square meals. My situation is not much better. Due to past debt, the money lenders refuse to give me any loan. So dear children, ये जो जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि होती है, ज़मीन होती है, वो अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए श्रमिकों को बुलाते हैं, जो या तो लैंडलेस होते हैं या बहुत छोटे से प्लाट जिनके पास होते हैं, जो कि उस पर अपना एग्रीकल्चर कर पाते हैं और वो बहुत गरीब होते हैं. और इस कंडीशन में जो गवर्नमेंट ने 300 रुपीज़ पर डे लेबर चार्ज फिक्स किया हुआ है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर एक डाला और रामकली के विषय में बताया गया कि बहुत पुअरेस्ट जो नेटिव हैं एक पालमपुर ग्राम के, और वो क्या करते हैं कि 300 रुपीज़ पर डे गवर्नमेंट ने उनको फिक्स किया है, लेकिन उसके बाद भी 160 रुपीज़ ले करके और मजदूरी करने के लिए रेडी रहते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत है और आजकल नई नई मशीनें आ जाने की वजह से और उनको काम मिलना बहुत टफ होता जा रहा है. कभी कभी इन्हें बदले में फसल पर इनका कोई अधिकार नहीं होता है, इन्हें बदले में मजदूरी मिलती है और कभी कभी उन्हें भोजन भी प्राप्त हो जाता है. तो लेट्स डिस्कस
Why are farm laborers like Dala and Ramkali poor? ये लोग गरीब क्यों हैं? Gosaipur and Majoli are two villages in North Bihar. Out of a total of 850 households in the two villages, there are more than 250 men who are employed in rural Punjab and Haryana or in Delhi, Mumbai, Surat, Hyderabad or Nagpur. Such migration is common in most villages across India. Why do people migrate? Can you describe based on your imagination the work that the migrants of Gosaipur and Majoli might do at the place of destination? So students, here is two questions. These both are based on your imagination. So imagine and give the answer. Now the capital needed in farming. So let's start. You have already seen that the modern farming methods require a great deal of capital, so that the farmer now needs more money than before. Most small farmers have to borrow money to arrange for the capital. They borrow from large farmers or the village money lenders or the traders who supply various inputs for cultivation. The rate of interest on such loans is very high. They are put to great distress to repay the loan. In contrast to the small farmers, the medium and large farmers have their own savings from farming. They are thus able to arrange for the capital needed. How do these farmers have their own savings? You shall find the answer in the next section. So students, आपने देखा कि अब जो खेती होने लगी है उसके लिए बहुत ज़्यादा और ज़्यादा कैपिटल की मनी की ज़रूरत होती है, क्योंकि अब नई नई मेथड्स से मॉडर्न तरीके से हो रही है, तो उसके लिए मशीन्स चाहिए, नई नई चीज़ें चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, फिर उसके लिए उधार लेते हैं, या तो मनी लेंडर से, गांव के ही मनी लेंडर से लेते हैं, या फिर वो बड़े किसानों से लेते हैं। इस तरह से वो उधार लेकर के अपने कल्टीवेशन वो करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, लोन जो होता है उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है और उन्हें जो चुकाने में बहुत परेशानी होती है, और कई बार तो वो चुका भी नहीं पाते हैं। फिर स्मॉल फार्मर्स या मीडियम और लार्ज फार्मर्स, ये सारे क्या करते हैं, यही जिनके पास कुछ सेविंग है वो तो अपनी आवश्यकता के लिए कुछ कैपिटल को जोड़ पाते हैं, इकट्ठा कर पाते हैं, ताकि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। यदि उनके पास अच्छी सेविंग होगी तो वो और अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स? यू शैल फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो ये जो सेविंग करते हैं वो किस तरह से करते हैं, इसका आंसर हमें नेक्स्ट सेक्शन में हम इसको पढ़ेंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे। सविता इज अ स्मॉल फार्मर. She plans to cultivate wheat on her 1 hectare of land. Besides seeds, fertilizers and pesticides, she needs cash to buy water and repair her farm instruments. She estimates that the working capital itself would cost a minimum of rupees 3,000. She doesn't have the money, so she decides to borrow from Tejpal Singh, a large farmer. Tejpal Singh agrees to give Savita the loan at an interest rate of 24% for 4 months, which is a very high interest rate. Savita also has to promise to work on his field as a farm laborer during the harvest season at rupees 100 per day. As you can tell, this wage is quite low. Savita knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field and then work as a farm laborer for Tejpal Singh. The harvest time is a very busy time. As a mother of 3 children, she has a lot of household responsibilities. Savita agrees to these tough conditions as she knows getting a loan is difficult for a small farmer.
तो स्टूडेंट्स, जो सविता है ये अपने 1 हेक्टेयर के जमीन है उसके पास, उसमें वो वीट को उगाना चाहती है। उसे सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, इन सब के लिए उसे पैसों की ज़रूरत है और इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए। तो वो जो है वो 3000 रुपीज़ उसे लगभग चाहिए। उसके पास मनी नहीं है तो उसने तेजपाल सिंह से, जो कि एक बड़ा किसान है, उससे उसने लोन लिया। और उसने लोन कितना दिया? 4 मंथ्स में 24% इंटरेस्ट, जो कि आप समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाई रेट है। और इसके साथ साथ जो सविता थी उससे ये भी प्रॉमिस ले लिया कि वो जब हार्वेस्टिंग सीजन आएगा तो उसमें 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से वो जो तेजपाल सिंह है उसके यहाँ पर वो हार्वेस्टिंग का काम भी करेगी। सविता जानती है कि उसे बहुत हार्ड वर्क करना होगा, क्योंकि उसे ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा। और वो यह भी जानती है कि ये जो तेजपाल सिंह है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है और बहुत कम वेजेस उसे दे रहा है उसके यहाँ वर्क करने के लिए। लेकिन क्योंकि जो स्मॉल फार्मर्स है उनके लिए पैसे की बहुत तंगी होती है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए सविता इन सब चीज़ों के लिए एग्री हो गई है। जबकि वह 3 बच्चों की माता भी है और उसके लिए हाउस होल्ड वर्क्स भी बहुत सारे हैं, फिर भी उसे ये सारे टास्क को कंप्लीट करना होगा, यह उसकी एक मजबूरी है। सो लेट्स डिस्कस द story so far. We have read about the 3 factors of production: land, labor and capital, and how they are used in farming. Let us fill in the blanks given below. Among the 3 factors of production, we found that labor is the most abundant factor of production. There are many people who are willing to work as farm laborers in the villages, whereas the opportunities of work are limited. They belong to either landless families or blank. They are paid low wages and lead a difficult life. In contrast to labor, blank is a scarce factor of production. Cultivated land area is blank. Moreover, even the existing land is distributed equally or unequally among the people engaged in farming. There are a large number of small farmers who cultivate small plots of land and live in conditions not much better than the landless farm laborer. To make the maximum use of the existing land, farmers use blank and blank. Both these have led to increase in production of crops. Modern farming methods require a great deal of blank. Small farmers usually need to borrow money to arrange for the capital and are put to great distress to repay the loan. Therefore, capital too is a scarce factor of production, particularly for the small farmers. Though both land and capital are scarce, there is a basic difference between the 2 factors of production. Blank is a natural resource, whereas blank is man-made. It is possible to increase capital, whereas land is fixed. Therefore, it is very important that we take good care of land and other natural resource used in farming. So students, you have to fill the blanks because you have to find out. Otherwise, if you will unable to find out these answers, then I will tell you in the online class, doubt class. So students, you have to complete the copy up to here, the subtopic of 6.